मैनहट्टन वेंचर्स पार्टनर्स के हेड ऑफ रिसर्च एंड पार्टनर संतोष राव जुड़ गए हैं हमें मदद करने की। संतोष, वेरी गुड मॉर्निंग, थैंक यू वेरी मच हमसे जुड़ने के लिए। तो संतोष, ये दोनों साइड ऑफ द आर्ग्यूमेंट बताएं। एक साइड ऑप्टिमिस्टिक है, आपके मित्र एलेरियन जी और आपके गुंडला जी, वो कह रहे हैं कि फेड ने सही किया, कमेंट्री देकर बाजार को मैसेजिंग सही दे दी और एक्चुअली यूएस इकोनॉमी के जो इंडिकेटर है बहुत ज्यादा कमजोर नहीं है। दूसरी तरफ वाले लोग बोल रहे हैं कि भाई साहब अभी तो हायर फॉर लॉन्गर है, तो बाजार में मंदी होनी चाहिए। आप किस साइड को रीड कर रहे हैं बेटर? आई थिंक आप जैसे अभी बताया कि देयर वर प्लसेस एंड माइनसेस। प्लस साइड में आई थिंक द बिगेस्ट प्लस वाज ही सेड द रिसेशन इज नॉट एनी टाइम सून, ही इज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट, एंड overall GDP expectations, he's increased that, and employment is pretty steady. So I think there was a lot of good news, but I think the higher for longer was a little bit of surprise. ऐसा लगा कि शायद बोलेंगे कि एक बार बढ़ाएंगे रेट and next year will be 4 cuts, पर उन्होंने बताया कि next year will be 2 cuts instead of 4 and he's going to stay there longer. So that was a slight negative, but I think क्या होना है, थोड़े दिन अभी it's going to take a while for the market to adjust to that, and then we will come to a new equation at this point. The market was pricing in cuts next year right away, and that but he was hawkish. He was bullishly hawkish actually. So I think that was a little bit of surprise. So देखेंगे क्या होता है, but I think overall I think it was in line with expectations. Thoda, I think I wish he had said कि we're going to cut sooner. But next year election year भी है. We'll see how much he can sustain that, क्योंकि there is going to be pressure. तो ऐसा काफी balls in the air है. तो अब देखना पड़ेगा कैसा market interpret करेगा. मेरे को तो लग रहा है कि थोड़े दिन नीचे रहेगा, फिर बाद में adjust हो जाएगा. If we know कि 5.1% is going to be the long term rate for a while, I think we can work around that. तो नेट ये बताइए कि यूएस मार्केट्स में जो डेटा आ रहा है, जो फेड का स्टांस अब बन के आया है और जो बड़े फंड्स वालों की पोजीशनिंग है, उसको देख के आपको डाउनसाइड कितना दिखती है, या ये सारी बातें बाजार धीरे धीरे फैक्टर इन कर रहा है तो शैलो करेक्शन आके मामला बदल जाएगा? I think थोड़ा करेक्शन तो होने वाला है, and we want that. And he wants that as well. हालांकि वो देखते नहीं है स्टॉक मार्केट पे, but I think that is a good indicator of where the sentiment is and where the economy is going. So I think a little bit of correction, 5 to 10%. I would say at least 5% is will be healthy actually. It will be a good correction. Especially technology stocks are pretty rich, even at this rate valuations काफी rich है, and a narrow band of stocks. तो वो शायद थोड़ा correction होगा, it will spread out more, the width will get wider. तो देखेंगे, I think at the end of it, maybe after maybe 1-2 महीने के बाद, as we head closer to the end of the year, I think things will improve and we'll get a better visibility. क्योंकि अभी end of the year generally market acts up after, I mean, it does better after this November, September, October usually is very volatile. So going into that, but he said he's data dependent. तो देखेंगे क्या होता है. The lag effect जो है अभी शुरू होने वाला है. They say कि raised rate hikes के lag effects take about 12 to 18 months. We are on the 15th month of the rate hike that he started last year. So I think we are in the early stages of that. So I think उसका वो देखने वाले हैं कि क्या होने वाला है उसका. अगर वो but he's pretty much said कि soft landing is not his goal. It's not his baseline. It's just objective, but it doesn't guarantee that. So I think a lot of balls in the air at this point. I think market generally is going to be conservative. It's going to pull back because I think the downside is more than the upside at this point. डाउनसाइड इज मोर देन दी अपसाइड, ये आपने बहुत काम की बात बताई संतोष. रियली अप्रिशिएट आप जो हमें मदद करते हैं यूएस के कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम को, कमेंट्री को, इकोनॉमी को इंडियन व्यूअर और ट्रेडर को कैसे समझना चाहिए, कंज्यूम करना चाहिए, उसमें हम रियली अप्रिशिएट करते हैं. बहुत बहुत शुक्रिया आज भी हमसे बात करने के लिए. शुक्रिया.